Good afternoon, my dear students. First of all, I welcome you into my YouTube channel and 11maths. Okay. So, in the last few classes, I have discussed about the basic concept regarding the introduction of complex number and properties of conjugate and as well as modulus of a complex number. ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था और related to this we have also solved some few problems. And today we are going to discuss about a very important and very useful topic related to this particular chapter, complex number. And this topic is representation of complex number into the what? Polar form. Okay, this is the form, it is called polar form of a complex number. Okay, and before going to know about the polar form of a complex number, first we have to know about a very simple and important concept that is called argument. What is argument of a complex number? It is also another name is called amplitude. That is, if Z is a complex number, what is the argument of a complex number? That is the purpose of today's discussion. Today हमें क्या चाहिए, ये argument के बारे में काफ़ी discussion होगा और then we know about polar form of the complex number. ठीक है. So first of all, a statement I have written that is called what is argument. Argument is an angle, very important. Argument is an angle. What type of angle? Made by the complex number. ये जो complex number है, made by the complex number with the positive x-axis. If you go to the particular figure, you see, suppose this is the point P represented by the complex number what? Z is equal to what? X plus iy. ठीक है. And ये जो z is equal to x plus iy है, it can be represented by the point xy, by the point what? xy. ठीक है. And we know that complex number can be represented in eigenplan. It is what? Eigenplan. Okay. Now, if we join P with that is origin, then it is OP. Now, this OP, this arrow, that is this OP makes an angle alpha with what? X-axis. Okay. Makes an angle alpha with what? Positive x-axis. Very important. It is positive x-axis, this is negative x-axis with positive x-axis. So angle made by the complex number, I am saying complex number. Complex number means the complex number जहाँ में है वहाँ से origin तक join करने के बाद एक arrow mark मिलेगी, and that arrow will be what? Makes an angle alpha with what? Positive x-axis. And this angle is called argument of the complex number. Okay. So here argument of this complex number is what? It is denoted by small this arg, or sometimes it is denoted by arg. Okay. So argument of z is equal to what? Argument of z equal to, basically you say it is capital A. Argument of z is equal to what? Here alpha, or a small letter can be used also, no issue. So argument of a complex number, it is also named as amplitude. Amplitude of z is equal to what? Alpha. Okay. What is alpha? Alpha is the angle made by the complex number with the positive x-axis. Okay. Here the complex number lies in first quadrant. Okay. So if you draw a right angle triangle, this is your y. Okay, and this is your x. Understood? So how to find alpha? You have to know about alpha. Alpha कैसे निकालेंगे? Tan alpha equal to what? Perpendicular by what? Y by x. What is alpha? You see, alpha is an acute angle. What type of angle? Alpha is an acute angle. Alpha is what? Acute. Since alpha is acute, means whenever I say alpha is acute, in your mind you imagine some angle like 20 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, this type of angle. And for this type of angle, what happened? Tan alpha always positive. Tan alpha is what? Positive. So right hand side क्या है? Left hand side क्या है? Positive है. Now if left hand side is positive, since equality is there, the right hand side भी positive होना चाहिए. Is it positive or no? Not, you have to check. Since the complex number lies in first quadrant, so x is positive, y is also positive. ठीक है? X positive भी है, y भी positive है, तो right hand side is also positive. So tan alpha equal to y by x. This particular relation is correct. This particular relation is what? Correct. Since very important, this the alpha is acute. Understood? So when complex number lies in first quadrant, this is the argument alpha. And how to get alpha? Alpha equal to that is by this relation. उस relation से alpha निकल जाएगी. ठीक है.
तो आपका एक एग्जांपल ले ले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक, सपोज z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, z इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस आई। इसमें x क्या है 1 है, y क्या है 1 है, दोनों पॉजिटिव है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर विल लाइज इन व्हाट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सो tan अल्फा, इफ अल्फा इज द एक्यूट एंगल, तो ऐसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। सो tan अल्फा इक्वल टू व्हाट, tan अल्फा इक्वल टू व्हाट y बाई एक्स, y means 1, x mean 1, that is tan alpha equal to what, tan alpha equal to what 1, or alpha equal to what 45 degree means pi by 4, ठीक है। सो दिस इज द आर्गूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू what pi by 4, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू what pi by 4, अंडरस्टूड। सो दिस रिलेशन इज important, नाउ इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो क्या होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ these are the particular pi by 4 whatever with the argument we are finding, ये जो आर्गूमेंट है, ये जो आर्गूमेंट है, दिस आर्गूमेंट आर कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गूमेंट, वी आर कंसिडरिंग व्हाट प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ओके। नाउ व्हाट आर द जनरल आर्गूमेंट, लेट अस डिस्कस, ठीक है। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है ये भी मैं डिस्कस करूँगा। Now this is alpha, okay, this is the alpha, this is called principal argument, okay. Now if I again start to rotate, ठीक है, ये अल्फा मिल गया, this is your alpha, and again you rotate twice pi angle and reach at this point, फिर आके ये OP में मर्ज हो गए, ठीक है। आपने कितना राउंड किया है, this is up to twice pi plus what alpha, so your दिस इज द न्यू एंगल यू क्रिएटेड, बिकॉज हमारा क्या है OP ने, दिस OP विल मेक एन एंगल पॉजिटिव, मेक एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मेक एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड आर्गूमेंट, ओके। और फिर अगर एक रोटेशन करने के बाद फिर आके इस लाइन में पहुंच गए, आई रीच दिस लाइन, सो OP इज मेकिंग हाउ मेनी एंगल ट्वाइस पाई प्लस अल्फा, सो आर्गूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ट्वाइस पाई प्लस अल्फा। इफ आई रोटेट अनदर रोटेशन, अगर फिर और एक रोटेशन करे ऐसा, और एक ट्वाइस पाई रोटेट करे तो क्या होगा 4 पाई प्लस अल्फा। इफ आई रोटेट अनदर देन इट विल बी 6 पाई प्लस अल्फा। इन दिस वे सॉल्व यू विल गो ऑन, ओके। देयर आर मेनी एंगल यू विल गेट, लाइक इन दिस वे ट्वाइस पाई प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा, इन दिस वे, ओके। एंड इफ आई रोटेट इन दिस डायरेक्शन, अगर ऐसा रोटेट करे, ठीक है, आके फिर पहुंच गए सर, ओके। स्टार्ट विथ रोटेशन, वहाँ से शुरू करके क्या क्या मैंने वहाँ से शुरू करके फिर यहाँ आके पहुँच गए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ रोटेशन, ये जो रोटेशन हुआ कितना एंगल हुआ ट्वाइस पाई हुआ, ये जो रोटेशन हुआ इट इज़ क्लॉकवाइज, अर्लियर रोटेशन इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग पॉजिटिव प्लस 2 पाई प्लस 4 पाई, राइट। एंड इसमें क्या होगा, क्या हो रहा है, वहाँ से 1 फुल रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन में क्या हो रहा है ट्वाइस पाई ऐड हो रहा है, ट्वाइस पाई ऐड हो रहा है, लेकिन ये ट्वाइस पाई नहीं है बिकॉज रोटेशन इज व्हाट क्लॉक, दैट्स वाई -2 पाई। तो इसमें क्या होगा -2 पाई प्लस अल्फा, -4 पाई प्लस अल्फा, ऐसा एंगल होते रहेंगे, ठीक है। सो आर्गूमेंट ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन वी अंडरस्टैंड दैट आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक, इट इज़ नॉट यूनिक, ये फिक्स्ड नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ arguments of a complex number. So in general, argument of z can be written as what, twice n pi plus alpha, okay. What is alpha? Alpha is the principal argument, alpha is the what, principal argument. And what is n? N belongs to what, z. If you put n equal to 0, you are directly getting what, alpha. If you put n equal to 1, you are getting this. If you put n equal to 2, you are getting this. If you put n is equal to -1, you are getting this, ठीक है। तो आपको मिल रहा है, समझ में आ रहा है। सो आर्गूमेंट जनरल आर्गूमेंट, दिस पार्टिकुलर रिलेशन इज कॉल्ड जनरल आर्गूमेंट, जनरल आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, जनरल आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। बट इफ आई आस्क एनीबॉडी, सपोज आई आस्क you the people, there are 50 students, 60 students are there in a class. So if I ask you, then what is the argument of the complex number 1 plus r? Okay, someone will give the answer, it is pi by 4.
someone will give the answer twice pi plus pi by 4, someone will give the answer 4 pi plus pi by 4, someone will give the answer twice pi plus pi by 4. All the answers are correct, but mathematician think about that to standardize the result को सब जगह में in every places for every particular individual the answer of the particular question or particular result क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. तो for this they have introduced a particular term, it is called principal argument. उन लोगों ने क्या किया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बारे में एक डिस्कशन किया और एक इंट्रोडक्शन किया. एंड दिस प्रिंसिपल आर्गूमेंट व्हाट ऑलवेज यूनिक, उसका वैल्यू क्या होगा, सब जगह में एक ही होगा. जैसे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है, अल्फा है, दिस इज द ओनली अल्फा. ओके, एंड हेयर इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल अल्फा में क्या वैल्यू आया, पाई बाई 4 हो गया. आई प्लस आई के लिए व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गूमेंट, पाई बाई 4. ओके, एंड देयरफॉर दिस इज यूनिक, this is what, unique. So in this particular chapter, whatever with the argument we are going to discuss, all the argument are what, principal argument. We are not discussing about general argument. ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है. Now range of principal argument, they have chosen range of principal argument. What is the range of principal argument? Range of principal argument is if theta equal to argument of z. Whenever I say argument of z, any angle, you imagine that it is principal. I am saying theta is an argument of z means theta is a principal argument. उसका range क्या है, minus pi less than theta less than equal than what, pi. So this is the particular range of principal argument. Principal argument क्या होगा, पाई से बड़ा नहीं हो सकता और माइनस पाई से छोटा नहीं हो सकता. ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन माइनस पाई बट लेस देन व्हाट, ग्रेटर देन माइनस पाई बट लेस देन व्हाट, पाई, और इक्वल टू पाई. मैक्सिमम क्या हो सकता है, पाई होगा या इससे कम होगा. तो उसको कैसे समझे, ठीक है, समझ, दैट्स आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए फिगर एंड यू सी यू विल गेट एन आइडिया. Suppose that this is a complex number this is a particular complex number p represented by point p, and another complex number, suppose here q. Okay, this is also another complex number. What is the argument of this complex number? So ये complex number क्या है, origin के साथ ड्रॉ करो. इसके बाद ये जो एरो मार्क है उसने पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या एंगल किया, थीटा. पॉजिटिव एक्सिस से क्या एंगल किया, थीटा, एंड दिस थीटा इज द आर्गूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड ये थीटा क्या होना चाहिए, माइनस पाई और पाई के बीच होना चाहिए, माइनस पाई और पाई के बीच होना चाहिए. तो ये जो एंगल है, आप फिगर से देखिए, दिस टोटल एंगल इज व्हाट, पाई. सो दिस एंगल इज लेस देन पाई. सो डेफिनेटली थीटा लाइंग बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, माइनस पाई और पाई के बीच में है. तो आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं. Now whenever you comes to this particular quadrant, क्योंकि आर्गन प्लेन में कोई भी क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, then if you draw this line and according to the definition क्या है, this arrow makes an angle with the positive axis. तो एंगल आप क्या होगा, is it the argument of a complex number? Here you see this angle is something greater than what, pi, because up to this level it is pi and plus something means it is greater than what, pi. तो उसका आर्गूमेंट क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट क्या हो रहा है, पाई से बड़ा हो रहा है. तो इस रेंज में नहीं आ रहा है, इस रेंज में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है. इसीलिए टू मेक द आर्गूमेंट विद इन द रेंज के अंदर हमें रखना होगा. ये थीटा क्या है, रेंज के अंदर रहना होगा. तो टू मेक द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर विद इन द रेंज, व्हाट वी विल डू, वी विल मेक द रोटेशन. दिस टाइप ऑफ रोटेशन आर कॉल्ड व्हाट, anti-clockwise rotation. Okay, so we'll make a rotation like that. Understood? Make a rotation like that, and this rotation is what, clockwise. Okay, whatever with the angle created, जो भी एंगल क्रिएट होगा, ये एंगल क्या होगा, up to this level, you see up to this level
it is what? Pi. It is what? Pi. And since this rotation is what? Clockwise, so it is what? Minus pi. And your angle is what? Up to this level. So ये क्या है? माइनस पाई से क्या होगा? बड़ा होगा. माइनस पाई इज व्हाट? बिगर नंबर. उसके अगर नेगेटिव साइन होगा तो ये छोटा हो जाएगी. तो ये एंगल क्या होगा? उस रेंज के अंदर आ जाएगी. इस रेंज के अंदर क्या होगा? आ जाएगी. ठीक है. सपोज आई से माइनस 20 डिग्री एंड माइनस 30 डिग्री, विच वन इज ग्रेटर? डेफिनेटली माइनस 20 डिग्री इज ग्रेटर होगा. तो ये जो एंगल होगा उसके अगर मैं नेगेटिव दिया करूँ, सपोज इसे थीटा, उसके अगर नेगेटिव है और अल्टीमेटली ये थीटा इज व्हाट? लेस देन जीरो, नेगेटिव वैल्यू. ओके. ये जो थीटा है, ये थीटा क्या होगा? पाई से बड़ा होगा, बिकॉज ये एक नेगेटिव नंबर है और ये एंगल पाई से छोटा है. तो माइनस पाई अगर माइनस लगा लो, सो पाई इज ग्रेटर देन व्हाट? पाई इज ग्रेटर देन दिस एंगल. सो माइनस पाई लगाएंगे तो क्या होगा? ये नेगेटिव एंगल क्या होगा? बड़ा हो जाएगी. जैसे आप सपोज कर लो इस टाइप का, ये पाई टाइप है, ये क्या है? थीटा है. तो अल्टीमेटली ये बड़ा होगा कि नहीं? बड़ा होगा. तो इस रेंज में आ रहा है. अंडरस्टूड? क्लियर? तो व्हेन एवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हम पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हम क्या करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आने के बाद क्या करेंगे? रोटेशन क्लॉकवाइज करेंगे. क्लॉकवाइज करने का मतलब है टू मेक द आर्गूमेंट विद इन द रेंज. उस रेंज में आना है. अगर ऐसा रोटेशन करेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन पाई. ये पाई से बड़ा हो जाएगा, रेंज में नहीं आएगा. अंडरस्टूड? नाउ इफ आई कंसीडर ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन द, suppose this is a complex number z represented by the point r. So this is your arrow mark, and this arrow mark अगर ऐसा रोटेशन करे, suppose you are rotating in this way, okay, this is your argument according to the definition. But what happen? It will be greater than what? Again pi. So it will not lies in the range. Therefore you cannot make this type of rotation. Anti-clockwise rotation नहीं कर सकते. आप क्या करेंगे? This type of rotation करेंगे. Understood? So this, if this angle is alpha, then your argument is what? Minus alpha. Argument is what? Minus. ये एंगल अगर 30 डिग्री हो तो ये माइनस 30 डिग्री होगा. ये 20 डिग्री हो, ये माइनस 20 डिग्री होगा. ये 40 डिग्री हो, ये माइनस 40 डिग्री होगा. ये अल्फा है तो माइनस अल्फा होगा कि नहीं? एंड अल्फा इज व्हाट? एक्यूट एंगल. सो वाई माइनस? बिकॉज ऑफ द क्लॉकवाइज रोटेशन. ये जो रोटेशन के बारे में, एंगल के बारे में हमने डिस्कस किया था. आप क्या है, that is we have discussed about this thing in our trigonometry chapter. Okay, trigonometry chapter में पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ. सो दिस, बिकॉज दिस फॉर दिस रोटेशन, दैट्स वाई इट इज़ माइनस अल्फा. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया. तो आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट लाइंग बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, नॉट इक्वल टू पाई माइनस पाई बट इक्वल टू पाई. पाई हो सकता है लेकिन माइनस पाई नहीं होगा, माइनस पाई नहीं होगा. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट क्वाड्रेंट. उसका वैल्यू क्या होगा? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई प्रिंसिपल आर्गूमेंट. वट एवर विद द आर्गूमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, you have to think over that all the argument are principal argument. Okay, all the argument are what? Principal argument. We have discussed about what? First quadrant. First quadrant माने के बारे में डिस्कस को. This is the complex number lies in first quadrant. And it is what? X, y, it is what? X, this is the angle alpha, and therefore in the first quadrant, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिला? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट if the complex number lies in the first quadrant, then argument of z equal to what? Alpha. Okay, and how to get this is alpha? By the relation y by x. ठीक है. This is for first quadrant. Now if I consider the complex number lies in what?
सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर, so this is the complex number represented by z is equal to x plus iy and this is the your theta. Okay, now if you draw, this is x, this is what y, and this angle is an acute angle within the right angle triangle. right angle triangle के अंदर ये एक छोटा सा एंगल है less than 90 degree. acute means what, it may be 30 40 50 60 like that. Okay, now when complex number lies in second quadrant, example ले ले suppose -1 प्लस आई, -1 प्लस आई मीन्स हियर x क्या है -1 है, y क्या है +1 है, तो जब x नेगेटिव x -1 y +1 तो हमें ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ मिलेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट मिलेगी. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, नेगेटिव होता है, y क्या होता है, y इज़ व्हाट पॉजिटिव, y इज़ व्हाट पॉजिटिव. सो हियर x इज़ व्हाट नेगेटिव, y इज़ व्हाट पॉजिटिव, y इज़ व्हाट पॉजिटिव. अंडरस्टूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And what is your argument? Your argument is what, theta, and theta is what, if you consider full angle, it is what, alpha, it is what, that is pi, this angle is what, pi. So pi से alpha माइनस करें तो आपको क्या मिलेगा, theta मिलेगा. ठीक है, so if z is equal to x plus iy lies in the second quadrant, in the second quadrant, then argument of z equal to what, theta. Okay, and theta equal to what, pi minus alpha. Okay, from pi you have to subtract what, alpha. alpha करने के बाद आपका theta मिल जाएगा. ठीक है, understood. now your aim is to find alpha. how to get alpha, alpha equal to what, tan alpha equal to what, y by x. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो ट्राइंगल लेंगे तो ट्राइंगल लेने से tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस y by x. व्हाट इज अल्फा, मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल. ये फिगर से पता चल रहा है अल्फा इज एन व्हाट, एक्यूट एंगल. सो एक्यूट एंगल जब होगा वो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री ऐसा कुछ होगा, और उसके लिए tan ऑफ दैट एंगल इज व्हाट, ऑलवेज पॉजिटिव. जैसे tan 30 डिग्री होगा तो 1/√3, tan 60 डिग्री होगा तो √3, tan 45 डिग्री इज व्हाट, I mean 1, it is positive. So every value are positive. So if you consider tan 20 degree, 10 degree, for all this tan alpha is positive. That means the left hand side is positive. Left hand side is what, positive. Now go to the right hand side. ये y क्या है, पॉजिटिव है, एंड x क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, हमें फिगर से पता चल रहा है. तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, टोटल क्या हो रहा है, y by x is what, नेगेटिव, y by x is what, नेगेटिव. लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, राइट हैंड साइड नेगेटिव, एंड बीच में क्या है, इक्वलिटी नहीं, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता. ये जो भी नंबर होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब जाके दोनों इक्वल हो सकता है. पॉजिटिव नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर. सो सिंस इक्वलिटी इज देयर, तो लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ये कन्फर्म है, 100% है, बिकॉज अल्फा इज व्हाट, एक्यूट. हमें अल्फा क्या सपोज किया, एक्यूट सपोज किया, इसीलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये राइट हैंड साइड को कुछ करना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने के लिए. तो हम क्या करेंगे, इसको एक हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, हमें पता है मैथमेटिक्स का, ये एक मॉडुलस. मॉडुलस क्या है, इफ़ यू टेक मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर, बिकॉज y एंड x आर रियल नंबर, तो y by x इज ऑल्सो रियल नंबर, और रियल नंबर के ऊपर अगर मॉडुलस लिया जाए तो वो पॉजिटिव बन जाती है, तो आप उसके मॉडुलस लगा लो. ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया. जो भी हो, अंदर नेगेटिव हो तो मॉडुलस लगाने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इक्वेशन सेटिस्फाई. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, तो वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड द एक्यूट एंगल अल्फा, आप अल्फा निकालेंगे तो आर्गुमेंट निकाल सकते हैं. व्हेन यू फाइंड द अल्फा, यू हैव टू मेक दिस रिलेशन, tan अल्फा इक्वल टू मॉडुलस y by x. फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं चाहिए, बिकॉज y एंड x आर ऑलरेडी पॉजिटिव. ठीक है, नाउ कंसीडर अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट. Suppose I consider a complex number here, p representing the complex number z. This is your arrow mark. Okay. According to your definition, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए. But for principal argument, what happen?
प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैनॉट ग्रेटर देन व्हाट पाई, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस. सो हमें क्या रोटेशन लेना होगा, विल टेक क्लॉकवाइज रोटेशन. दिस इज योर आर्गुमेंट. इफ इट इज सपोज थीटा तो उसके आगे क्या आएगी, उसके आगे माइनस आएगी. माइनस क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन. ओके, क्लॉकवाइज रोटेशन. सो ये भी ड्रॉ कर लीजिए. दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. ठीक है. So number 3, if z equal to x plus iy lies in the third quadrant, then what is the argument of z equal to what, minus theta. Now you are going to find minus theta. Okay, theta क्या है, understood. माइनस आ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, रोटेशन, लेकिन एंगल क्या है, थीटा है. सो दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज सपोज अल्फा, एक्यूट एंगल. ओके, एंड ये होल एंगल क्या है, पाई है. ये होल एंगल क्या है, पाई है. तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस पाई माइनस अल्फा. थीटा कैसे निकालोगी, थीटा विल बी व्हाट, दिस थीटा विल बी नेगेटिव साइन फॉर रोटेशन. ओके, ये नेगेटिव भूल जाओ आप, थीटा के बारे में सोचो. थीटा इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री माइनस अल्फा. सो फाइनली यू आर गेटिंग व्हाट, माइनस पाई प्लस अल्फा. दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, हाउ टू गेट अल्फा, वेयर tan अल्फा इक्वल टू, अल्फा इज एक्यूट, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, ये y क्या है, ये वो x क्या है, नेगेटिव, y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव. तो उसमें मॉडुलस दे दो, क्या है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव होएगा. तो वी आर कंसिडरिंग मॉडुलस ऑफ दिस. मॉडुलस देने के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, सपोज p is a complex number in the fourth quadrant. So this is the arrow mark and it makes an angle this. This is what, suppose something minus alpha. If it is an already acute angle, right? ये डायग्राम ड्रॉ करें तो ये एक्यूट एंगल होगा कि नहीं, ये अल्फा होगा. तो दिस इज अल्फा. ओके, दिस इज द एंगल व्हाट, अल्फा. एंड सिंस द रोटेशन इज व्हाट, एंटी, दैट इज क्लॉकवाइज. सो आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस अल्फा. आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस अल्फा होगा. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. ओके, सो फाइनली यू आर, इफ z lies, z is equal to what, x plus iy lies in the fourth quadrant, then argument of z is equal to what, alpha, and alpha के आगे एक नेगेटिव साइन आएगा because of the rotation, because of what, clockwise rotation. ठीक है. तो फाइनली what we get, if complex number lies in the first quadrant, then alpha, second quadrant, then pi minus alpha, third quadrant, then minus pi plus alpha, and fourth quadrant is what, minus alpha. What is alpha? Alpha is the acute angle by the relation what, where tan alpha equal to what, y by x. Here x positive, y negative, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉडुलस tan alpha equal to मॉडुलस y by x. y क्या है, इट इज़ इमेजिनरी पार्ट, x क्या है, इट इज़ रियल पार्ट. ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट निकाल के मॉडुलस देने के बाद ये रिलेशन इज tan alpha. फ्रॉम दिस यू आर गोइंग टू फाइंड अल्फा, एंड इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट यू विल फाइंड व्हाट, complex number. ठीक है. So let us find 1-2 questions I have solved regarding this particular topic. Going to solve. Now we are going to find the argument of few complex number I have chosen. Okay, these are the 3 complex number I have taken. And from these 3 complex number, what are the argument of this complex number? We are trying to find this. Okay. So the question is, find the argument of the complex number. Here you see, first question, z is equal to what, root 3 plus i. Here compare with the standard form. Standard form के साथ अगर compare करें तो क्या होगा, x equal to what, root 3 and y equal to what, 1. So x positive, y positive,
therefore this complex number lies in first quadrant. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसका क्या होगा, आर्गुमेंट क्या होगा, अल्फा होगा. दिस इज द आर्गुमेंट. ओके, वेयर अल्फा इज व्हाट, एक्यूट एंगल. सो लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल such that what is tan alpha. For every cases we are taking the formula as modulus y by x. This is positive, this is positive. ठीक है, tan alpha equal to what, modulus y by x. What is y? Y equal to what, 1 and x equal to what, root 3, and it becomes what, 1 by root 3. तो modulus of 1 by root 3 equal to what, 1 by root 3. ठीक है, and tan alpha equal to what, 1 by root 3. Tan how many degree equal to what, 1 by root 3. We know, so this is 30 degree, and 30 degree in radian can be written as what, pi by 6. ठीक है, तो अल्फा क्या होगा, पाई बाई 6 होगा. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को. फिर जेड कहाँ है, जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या है, अल्फा है. दिस इज द एंगल. ओके, सो अल्फा इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 6, एंड हेंस दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, पाई बाई 6. ओके, दैट मीन द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर मेक्स एन एंगल पाई बाई 6 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जेड इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आई. इसमें क्या है, इफ यू कंपेयर विथ एक्स प्लस आई वाई, compare with what, x plus iy, what you get, x equal to what, -1 and y equal to what, root 3. X negative, y positive. X negative, y positive. X is negative, y is positive. The complex number lies in which quadrant? Complex number lies in what, the x negative, y positive. तो complex number lies in what, second quadrant. तो ये है आपका आर्गुमेंट. तो ये आर्गुमेंट, ये अल्फा है. ठीक है, तो ये कितना होगा, पाई माइनस अल्फा. ठीक है, पाई माइनस अल्फा. अंडरस्टूड. So let alpha be the acute angle. Always alpha is the acute angle, which is an angle in a right angle triangle. Okay, let alpha be the acute angle such that tan alpha equal to what, modulus. Modulus देने का मतलब है left hand side positive, right hand side should be positive. So tan alpha equal to what, after putting y equal to root 3 and x is equal to -1, तो ये क्या बनेगा, -√3 बनेगा. Modulus of -√3 is equal to what, +√3. रियल नंबर, कोई भी निगेटिव रियल नंबर के ऊपर अगर मॉडुलस दिया जाए तो ये पॉजिटिव बन जाती है. ठीक है, सो tan अल्फा इक्वल टू √3. वी नो दैट tan 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, √3. अंडरस्टूड. और 60 डिग्री मीन्स व्हाट, पाई बाई 3. तो अल्टीमेटली अल्फा इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 3. एंड सिंस योर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस अल्फा है. ठीक है, सो पाई माइनस अल्फा, एंड पुट इन द वैल्यू ऑफ अल्फा, यू विल गेट 2 पाई बाई 3 इज योर आंसर. ओके, so this is very easy method. In each and every problem you have to solve in this way. So this question lies in fourth quadrant, and fourth quadrant का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कीजिए. थर्ड क्वाड्रेंट वाला एक क्वेश्चन आप लीजिएगा, खुद लेके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इफ सपोज क्वेश्चन आस्क्स and that find the argument of a complex number which is not in standard form, standard form में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको standard form में convert करना पड़ेगा. You have to convert this complex number into standard form and then find x and y, and then all the procedure to be followed. Okay, I hope you understand. So complex number must be in standard form. Okay. So I discuss about few questions related to what, argument of a complex number. Okay, there are many questions in your text also. You go through the text and you will try to find the argument of the complex number. Okay, so quadrant के हिसाब से argument क्या होती है ये याद रखना है. What is principal argument, you have to remember, and all this thing you remember, then it will be easy for you to solve the question. Okay. Now we are going to discuss about that is called polar form. Polar form of a complex number. Polar form क्या है? Polar form. Okay. See, z is equal to what, x plus iy. It is equivalent to the point xy. This form is called, ये जो फॉर्म है, this form is called Cartesian form, because xy is a Cartesian coordinate. xy is a Cartesian coordinate. Now there is another form of this particular complex number. ये जो complex number है उसको दूसरे एक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो. We can represent this particular complex number in another form, and this form is called what,
polar form. What actually polar form is, let us we discuss. Okay, suppose the complex number is here, any quadrant. Okay, suppose this is quadrant. Okay, this is the complex number represented by the point x. This is called z. Z is equal to what? X plus I. Okay, so this is the line of P, and this is the what? Suppose theta. Theta is the argument of the complex number. Okay, and this particular line, this y, and this is what? X. Understood? And from the figure you see, it is very clear that sin cos theta equal to what? Cos theta equal to what? Suppose that from here to here, this length is called what? R. This is called what? R. R क्या होगा? पहले R निकाले. R equal to Pythagoras लो यूज करें. R is equal to what? Root over x square plus y square. होगा कि नहीं? और ये क्या चीज़ है? What is this? It is what? Modulus of a complex number. If z is a complex number x plus iy, then what is the modulus? This is modulus. तो ये r क्या है? Modulus of the complex number. R is equal to what? Modulus of the complex number. And from the figure, cos theta equal to what? Base by hypotenuse, x by r, implies x equal to what? R cos theta. ठीक है? And sin theta equal to what? Sin theta equal to what? Perpendicular by hypotenuse. So trigonometry is used here, simple. So y equal to what? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y इक्वल टू व्हाट? r sin थीटा. ठीक है? सो x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा. नाउ गो टू द कॉम्प्लेक्स नंबर. देयरफॉर z क्या होगा? व्हाट इज z? z क्या हो रहा है? x क्या हो रहा है? r cos थीटा प्लस i, एंड व्हाट इज y? r sin थीटा. एंड इफ यू टेक r कॉमन, cos थीटा प्लस i इंटू I into what? Sin theta. ठीक है? So this is your z. This new representation you get is called polar form. It is called what? Polar form. Okay? And from this polar form, you have to know about the significance of the term. ये एक term है, ये एक term है, ये सारी term के बारे में जानना होगा. What is R? You have to, very important, you have to write where, नीचे लिखिए where r equal to what? Modulus of z, and theta equal to what? Argument of z. Very important. So when a complex number you represented in this form, you must know about modulus of the complex number. R means what? Modulus of the complex number, and theta means what? Argument of the complex number. So कोई भी एक complex number दिया जाए और आपको कहे that is you have to represent the complex number into polar form, उसको polar form में reduce कीजिए, तो what you will do? You have to find modulus of the complex number and argument of the complex number. Understood? So let us discuss about few questions related to this particular concept. I am considering a question from your text. Convert the complex number. Question is, complex number क्या है? -16 by 1 plus I into root 3 into polar form. उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है? So this complex number not in standard form. First we reduce into standard form. उसको पहले standard form में कन्वर्ट करना होगा. Let us take the complex number as z. Suppose that it is what? Z. Z is equal to -16 by 1 plus I into root 3. Now to reduce a complex number into standard form, you already know you have to multiply numerator and denominator by conjugate of this. इसका conjugate क्या होगा? 1 plus I root 3 है. What is the conjugate? 1 minus I root 3. Very simple. प्लस होगा तो माइनस लगा दीजिए. -16 तो है, इंटू 1 minus I into root 3.
ठीक है, उसको और कैलकुलेशन करें। सो ये क्या होगा, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है 1, तो 1 होगा, एंड बी स्क्वायर मीन्स रूट 3 होल स्क्वायर मीन्स व्हाट 3, ओके, एंड नाउ वी मल्टीप्लाई इट, माइनस 16 प्लस आई इंटू 16 रूट 3, ठीक है। सो इसमें आई थिंक इट विल बी लाइक दैट, it will be like then minus 16 into what, I 1 minus I into root 3. So denominator is what 4, numerator is what minus 16 into 1 minus I into what root 3. Okay, कैंसिल करो, इसके साथ कैंसिल होगा, minus 4 into 1 minus I into root 3, and then you open up the bracket, minus 4 plus I into 4 root 3. Now this is in standard form, which is in the form what, x plus iy, which is in the form what, x plus iy. Now what is your x? You have to find out x, because to know the argument of a complex number, if you know the argument of a complex number and modulus of a complex number, you can represent it in polar form. आप polar form में represent कर सकते हैं. Therefore what is x? x is equal to what, minus 4 negative, y equal to what, 4 into root 3 positive. So x negative, y positive, the complex number lies in second quadrant, okay, understood. Now find the modulus. Therefore modulus of the complex number, इसका modulus क्या होगा, minus 4 whole square, real part whole square plus imaginary part whole square, 4 into root 3 whole square. उसका कैलकुलेशन करें क्या होगा, 16 plus 16 into 3 means 48, means 64, means what 8, ठीक है. So this is modulus of z, and to find the argument of a complex number you have to follow the procedure. You have to write, let alpha be the acute angle such that tan alpha equal to what, modulus y by x, okay. Now from here tan alpha equal to what is y, y is what, 4 into root 3, and what is x, minus 4, तो ये 4 कैंसिल होगा, माइनस रूट 3 होगा, माइनस रूट 3 का मॉडुलस क्या है, प्लस रूट 3, एंड फ्रॉम हियर यू कैन से अल्फा इक्वल टू व्हाट, tan alpha equal to root 3, alpha equal to what, pi by 3, alpha equal to what, 60 degree, ठीक है. Now as the complex number lies in which quadrant, it is lies in what, second quadrant. तो second quadrant में क्या होगा, argument pi minus alpha, it is what, therefore argument of z is equal to what, argument of z is equal to what, pi minus alpha. What is alpha, pi by 3, pi minus pi by 3 equal to what, 2 pi by 3, understood. And hence the polar form is, polar form of z is, फॉर्मूला क्या है, r के जगह में लिखेंगे मॉडुलस, ब्रैकेट cos ऑफ थीटा के जगह में लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z प्लस i sin argument of z, okay, because theta means what, argument of z, and r means what, modulus of z. So you can write 2 into cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3, okay. So in exam what happened, this particular part, this particularly ये जो part मैंने लिखा है ये ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, this is the answer, okay. So for your understanding I have written, okay, ठीक है. So in this way you can reduce the complex number into polar form, okay. This is a very nice question, understood. So any type of questions, whatever is it in standard form or not, you do not bother, and you have to reduce into standard form and follow all the procedure to find the argument of a complex number. To find the modulus of a complex number is very easy, and to find the there is a argument, you have to go for all the rules.
If it is in third quadrant, there is a different rule. If it is fourth quadrant, there is a different rule. So you have to follow all the rules. Okay. So in the next class, I will continue with a polar form, and I will solve few questions, and I will also discuss about there some more concept regarding what argument of a complex number. Okay. Hope you understand my class, and those who understand my class, and my appeal to everyone, please share my videos to all of your friends so that everybody can be benefited in such situation. Okay. And also subscribe my channel, and if you subscribe and if you give the likes more, then I will get motivated, and definitely that is I will get the feedback, right feedback. Yes, what should be the more reform to be done in my classes so that it will be more effective. Okay. And also बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि whenever बेल आइकन को अगर दबा देंगे तो क्या होगा, whenever I upload a video, notification will come to you, and you can watch the video at any time. Okay, at your feasible time. Hope that all will be in a good health, and keep your studies in a full swing so that you can do wonders in life. All the best. Thank you.